Okay, so today we are going to refer back to our original idea that you have substances and you have particles. Substances are pure or impure. And today our focus is going to be कि हमें पता तो है that pure are the ones that are made of only one kind of particle and impure are the ones that are made of only one or different kinds of particles. But how do you go from impure to pure? पहला ये question हमने आज answer करना. Second question that I want to answer today is what are impure things or how many kinds of impure things are there? So impure things are called mixtures, okay? And mixtures exist in two categories. There's one that's called suspension and there's one that's called solution. Suspension क्या होता है? Suspension में the things, the particles are visibly different. आपको देख के पता चल जाता है कि ये मिक्सचर है. सस्पेंशन ये है कि वो देखते साथ आपको सेपरेट नजर आ रहे हैं. So can you think of a suspension? Sir, maybe of sand and water. Sand and water. Excellent. Sand is there, water is there. आपको देखने से पता चल रहा है कि there are different things. The smog that us Lahoris see in the morning, that is a suspension. And we make the best suspension when it comes to smog. दुनिया में इतनी बुरी हवा किसी की नहीं है. So suspension always has something that one is visibly different and two, it settles at the bottom. जिस दिन बारिश होती है अगले दिन स्मॉग नहीं होता. क्यों? वो सस्पेंशन है, वो प्रेसिपिटेट है, वो नीचे बैठ जाता है. And then of course after a while वो वापस उठ जाएगा. So a word that I just used was precipitate. Precipitate is usually the thing, the solid in there. You also call it PPT. So you can have solution mixed with suspension. So for example, water, सी वाटर ले लेते हैं, उसमें सॉल्ट है, उसमें वाटर है, सब कुछ मिक्स हुआ है, और उसमें फिश भी है. द फिश आर द प्रेसिपिटेट इन देयर, क्योंकि वो विजिबली नजर आ रहा है कि ये और है और ये और है, ये पानी है और ये फिश है. एंड देन इफ यू आर आल्सो स्विमिंग, यू आर आल्सो अ प्रेसिपिटेट इन देयर. Similarly, when you look at air, air is a solution, air is a mixture. क्यों? क्योंकि आपको एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लदा नजर नहीं आते हैं. They're all mixed together. That's a solution कि जिसमें चीजें mixed together हो, यूनिफॉर्म हो. बट अगर कोई एरोप्लेन जा रहा है तो वो एरोप्लेन उसमें प्रेसिपिटेट है उस मिक्सचर के अंदर, क्योंकि खुदा ना खास्ता वो सेटल डाउन तो उसने करना ही है. व्हेन इट लैंड्स वो सेफली सेटल डाउन कर जाता है. सिमिलरली इफ यू हैव स्मॉल पार्टिकल्स तो वो सस्पेंशन इन द एयर सॉल्यूशन है. मिल्क इज इंटरेस्टिंग क्योंकि वो सोल्यूशन है, उसमें वाटर है, उसमें कैल्शियम आयंस हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या है, बट दे आर नॉट डिफरेंटली लुकिंग. वो एक ही तरह आपको नजर आ रहा है. बट पल्पी ऑरेंज जो है वो एक सस्पेंशन है, उसमें आपको विजिबली सेपरेट नजर आ रहे हैं. नाउ दिस सॉल्यूशन हैज टू थिंग्स. देयर इज द सोल्यूट इन देयर एंड देयर इज द सॉल्वेंट इन देयर. एंड द ओनली डिफरेंस इज कि सोल्यूट कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है. And usually we talk about solutes, the mixtures that we make ourselves in the lab. We measure solute in gram or, sorry, that's my dog. Hold on. So grams or moles, that's how we measure solute. And solvent is something we measure as a volume. Usually जो हम lab में करते हैं ना, we use them as a liquid, the solvent that we have. और उसको measure करते हैं DM cube में या CM cube में. So a couple of solutions you need to know about air. Air में क्या होता है कि आपके पास, you need to know this by the way, ये percentages भी आपको आनी चाहिए. Air has nitrogen as the main component. Okay.
So air has nitrogen. That's the solvent. क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा है air में. Okay? And then you have oxygen, which is the first solute that you have in the air. And then you have argon, which is the third most abundant gas in the atmosphere that we have. And then you have water vapor. But water vapor जो है वो dry gas की अगर percentage लें तो हम उसको count नहीं करते. But water vapor is there. There is carbon dioxide, the smog that you see, the dust particles that you see, the birds that are flying, they're all part of the suspension in there, visibly different. Okay? Now, another important thing that you need to know about is कि air में percentages क्या होती हैं. So for O levels people, the percentages are 78% for nitrogen, 21% of oxygen, and then the remaining. So जो O levels के लोग हैं उनको this is what you need to remember, these percentages. But IGCSE people, you need to know slightly different percentages अगर आपको एग्जाम में वो पूछता है. So those percentages are, अच्छा नहीं, wait a minute, इस साल 2023 में आपका एग्जाम है ना? Yeah, so in 2023 they've changed it. So IGCSE and O levels, they both need to remember this value. Last year तक different thing. So yeah, so 78% and 21% for nitrogen and oxygen in the air. And we are talking about dry, clean air. लाहौर की हवा की बात नहीं हो रही है. Okay. There's also carbon dioxide that has to be there, and there are pollutants as well in the air that we normally have access to. Similarly, जब आप acids की बात करते हो तो acids are always used as solutions. And acids को हम हमेशा देखते हैं कि इसमें कितना acid है in moles or gram dissolved in liquid or water या जो भी solution है हमारे पास, तो वो dm cube में उसको हम consider करते हैं. So when I say it is 0.5 mole per dm cube HCl, I'm basically saying that I have 0.5 moles of HCl, and I'll talk about what mole is later on. And the total solution is 1 dm cube. Okay. So all of that is there. और हमें पता लग गया कि mixtures किस तरह के होते हैं. Of course, there is a third kind of mixture. Colloids बोलते हैं उसको. We don't study that in O levels or IGCSE. Okay. What is the difference here? Impure वो है, which is made of multiple kinds of particles. But so is a compound. It's made of different kinds of atoms. तो problem क्या है? Difference क्या है? How is a mixture different from a compound? Can anybody tell me? The difference is the way these particles are arranged. Yes, Meher, you want to say something? Sir, I think that the compound में जो elements होते हैं, they're actually chemically combined. Yes. और The particles mixture are में, chemically combined. yes, और mixture में नहीं होते हैं. Yes. So what does it mean to be chemically combined? It simply means that the things combined using their electrons. Chemical combination always involves electrons. Physical combination simply involves कि वो उस एक जगह पे पड़े हैं. They're just in each other's vicinity. That's all. Now, whenever you have these things and you want to make pure substances from impure substances, that means you need to separate the particles. And separation जहां पर भी होती है ना, वो based on some difference होती है. Anywhere you see categories of things, they're all things separated from each other, but they're all just based on some differences. Mobile phones हैं, बहुत सी दुनिया की कंपनीज मोबाइल फोन्स बनाती हैं, बट इट्स ऑलवेज द आइडिया कि एप्पल पसंद है आपको या आपको एंड्रॉइड पसंद है, या एप्पल है या सैमसंग है. नाउ एंड्रॉइड फोन्स आर मेड बाय सो मेनी कंपनीज. सैमसंग है, हुआवे है, आई डोंट नो, सो मेनी अदर कंपनीज. बट उन सबको हम कैटेगराइज कर देते हैं एंड्रॉइड में. उनको हम अलग-अलग कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू दिस आइडिया, दिस डिबेट. क्यों? बिकॉज उनका सॉफ्टवेयर सेम है. बट जस्ट बिकॉज आईफोन हैज एन iOS, सो वी से कि ये डिफरेंट है और वो डिफरेंट है. कल को लेट सपोज कोई और कंपनी है, वो iOS यूज करना शुरू कर देती है, एप्पल उसे लाइसेंस दे देता है. सो वी विल नॉट डिबेट कि अच्छा एप्पल या वो या एंड्रॉइड. विल बी लाइक वो दोनों, एप्पल एंड दैट कंपनी एंड एंड्रॉइड.
because the difference is in terms of software, तो उसी की बेस पे सेपरेट करेंगे हम उनको. Separation always comes from differences. It is deeply rooted in our history as well. When Pakistan was made, this difference was very highly highlighted. Two nation theory, जो उस वक्त के लिए उन्होंने एक philosophy थी. So two nation theory simply talked about some differences that they saw, and they said कि ये difference बहुत strong है, and that's why we need separate states. But उससे पहले आप, why am I talking about this is, आपने उससे पहले पाकशरीज अभी पिछले साल में दिया है ना. So you might remember कि मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स होती थी या दूसरी रिफॉर्म्स होती थी, तो उसमें हमेशा वो कहते थे सेपरेट इलेक्ट्रोलेट चाहिए. वो सेपरेट इलेक्ट्रोलेट इसीलिए चाहिए था कि वो कहते थे कि हम थोड़ा सा डिफरेंट है. सो जहां पे डिफरेंस होगा वहां पे सेपरेशन होगी. दैट्स द पॉइंट आई वांट टू टेल यू. सो जब भी मिक्सचर्स को आपने प्योर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना है, तो आपको डिफरेंस को देखना है, और वो डिफरेंस की बेस पे आप उसको सेपरेट करोगे. देयर आर 5 डिफरेंसेस दैट वी लुक फॉर. फर्स्ट डिफरेंस इज सॉल्युबिलिटी. हम देखते हैं कि एक चीज सॉल्युबल है, एक चीज सॉल्युबल नहीं है. कैन यू थिंक ऑफ अ मिक्सचर जिसमें सॉल्युबिलिटी इज इंपॉर्टेंट? The differences of solubility. Salt and sand. Sand is insoluble in water. Salt is soluble in water. In fact, salt and sugar, if you want to separate them, वो दोनों mix हो जाते हैं. You separate them based on this because sugar is soluble in organic solvents. मतलब अगर आप वाटर यूजिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज कर सकते हैं. शुगर इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वेयर सॉल्ट इज नॉट. सेम आइडिया. शुगर एक्ट्स लाइक सॉल्ट ओवर देयर एंड सॉल्ट एक्ट्स लाइक सैंड ओवर देयर. एंड नॉट जस्ट दैट, इफ यू हैव एनी insoluble and soluble thing, the difference we are going to exploit is solubility. Another difference that they have, that we exploit, is density. We separate things based on their density because more dense things settle at the bottom and lighter things float at the top. So oil and water is a very classic example of this. Oil will be lighter, it will form a layer, and water will settle at the bottom. So if there's a oil spillage in the sea, in the ocean, तो उसको भी इसी बेस पे सेपरेट कर रहे होते हैं because crude oil is lighter than water, वो float करता है. And that way we are able to separate it. Similarly, another one that we use is boiling point. We separate crude oil into so many other fractions based on boiling point. Not just that, ये जो air की अभी हम बात कर रहे थे, we are able to separate air and we are able to get nitrogen that we use to make fertilizers, oxygen that we supply to the hospitals or we use as rocket fuel. नहीं, rocket fuel तो hydrogen होता है, मतलब we use oxygen in there as well. Argon use करते हैं in filament lamps and all that. All of this is separated based on the boiling point, क्योंकि इनका boiling point different है. वैसे ये एक ही solution के अंदर है, लेकिन boiling point different है, तो हम इनको separate कर सकते हैं. Then another one that we have is particle size. Sometimes things are separated based on this is bigger and this is smaller. For example, if you have different things, let's suppose आप sugar mix हो गई है salt में और बड़े बड़े sugar के cubes हों, तो आप उन्हें हाथ से उठा के साइड पे कर सकते हैं. That is a difference in particle size. जो चीज बड़ी नजर आ रही है वो उठा लो, जो छोटी है वो रहने दो. ठीक है. We use it when we use filters. Every filter is a door. कि जो उस door में से चीज गुजर सकती है वो छोटी है, वो उसमें से गुजर जाएगी. But the bigger thing will be stopped. मैं अपने कमरे में गाड़ी ड्राइव करके नहीं लेके आ सकता because the car is bigger than the door of this room. But anything that's smaller than this door can be brought in. So this door is acting as a filter. इससे छोटी चीजें आ सकती हैं, बड़ी चीजें नहीं आ सकती. And the last difference that we usually separate things based on is magnetism.
And that's self-explanatory. If you have two things mixed together, like iron and sand, you can easily separate them based on magnetism. So now, whenever you see a question in which you have a mixture, the key point you should be looking for is what is a difference that you can highlight and what is a difference that you can exploit when you're separating things. And if it is one of these, you know what methods to pick. So I'm going to walk you through just one example, and the reason I'm doing that is कि हमें पता लगे कि हम वो मेथड क्यों यूज कर रहे हैं और कैसे यूज कर रहे हैं, एंड सेकेंडली एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे. So I'm going to take an example of very fine gold particles that have somehow been mixed with silver nitrate. Now, silver nitrate के बारे में मैं आपको बता देता हूं that silver nitrate is soluble. But of course, gold particles are insoluble in water. Whenever you say soluble, O levels we will assume we're talking about water. If it is something else, we will mention that. So sometimes हम exam में कह देते हैं soluble in organic solvents. That shows कि ये चीज जो है ये water में शायद dissolve ना हो, लेकिन organic solvents like propanone या petrol उसमें dissolve हो जाएगी. Okay, so clearly we have a difference here. Magnetism का difference नहीं है. Gold is not magnetic. Silver nitrate is not magnetic. पार्टिकल साइज का डिफरेंस नहीं है, दोनों सॉलिड्स हैं, दोनों फाइन पार्टिकल्स हैं, दोनों मिक्स हुए हैं. हम उनको हाथ से नहीं अलग कर सकते, उठा सकते हैं. बट ऑब्वियसली वी कांट जस्ट लेट द गोल्ड पार्टिकल स्लाइड. हमें वो गोल्ड इकट्ठा करना है. सो व्हाट डू? वी एक्सप्लॉइट दिस डिफरेंस. हमें डिफरेंस मिल गया ना, वी विल एक्सप्लॉइट इट. क्या डिफरेंस है? सॉल्युबिलिटी का. सो द फर्स्ट स्टेप वी विल राइट इज दैट डिसॉल्व इन वाटर. In fact, a better answer would be, मैंने आपको बोला था कि दो तरह के आंसर्स हम सीखेंगे. एक आंसर जो ठीक है और एक आंसर which is good chemistry. So the good chemistry answer is that dissolve in distilled water. So for those of you, if there is anybody who's preparing for distinction, writing these terms helps. Full marks तो बहुत से बच्चों के आते हैं, सबकी distinction नहीं आती है. Second step. Now what do you have? You don't have gold particles. Right now they were both solids. अब ऐसा नहीं है. Now you now have silver nitrate as aqueous. The AQ part tells me that it has been dissolved. And you have gold particles, which is still a solid. It did not dissolve. We call this a precipitate. It doesn't dissolve. It stays as it is. The other thing has dissolved. Okay. This was a solid. This has dissolved. So we say that precipitate dissolves. And this one is still a solid. So we say precipitate remains. Yeah, precipitate remains insoluble. Yeah, doesn't dissolve. But clearly now we have one solid and one silver nitrate. Silver nitrate जब solid था ना तो वो बहुत lattice की form में था, बड़ा था, तो उसको हम filter में से गुजार नहीं पा रहे थे. वो दोनों रुक रहे थे फिल्टर में. अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट फिल्टर करता ना तो ये दोनों रुक जाते. बट नाउ व्हेन आई हैव एडेड इट टू वाटर, सिल्वर नाइट्रेट के लैटिस टूट गया. वी विल स्टडी के लैटिस क्यों टूटा एंड ऑल दैट. सो अब वो अलग-अलग हो गया, एंड नाउ यू कैन सेपरेट इट आउट. यू कैन टेक देम आउट ऑफ अ फिल्टर. सो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी फिल्टर. And what will happen now? After filtration, you're going to get something that is a residue, and you're going to get something that is a filtrate. It would always be a good idea to draw it. अगर आपको एग्जामिनर कहते हैं ना you may draw a diagram, तो उसका मतलब ये you must draw a diagram. Remember this. So filter की definition diagram बहुत simple सी है. You take this and you do this. Remember, don't spend too much time on the drawing. But if you choose to draw, always label. So this is my my filtrate, which is basically AgNO3 aqueous, and this is gold, which is solid, which is my residue. Now let's say you are interested in a residue. आपको residue को इकट्ठा करना है, आपको gold को इकट्ठा करना है. So residue के लिए हम क्या करेंगे?
we will write this, and this is a key point. Wash and dry. 1 mark for this. अगर आपको residue निकालना है तो wash and dry. But for those of you again, good chemistry वाला आंसर क्या होगा? Wash with distilled water and dry in folds of filter paper. Why are we washing it? We are making sure कि अगर अभी भी कोई salt यहाँ पे रह गया है तो वो wash होके नीचे चले जाए. Okay. Now let's talk about the filtrate. Filtrate के examiner phrase करते हैं कि या तो मुझे crystals चाहिए या मुझे dry powder चाहिए. Examiner की wording आपने देखनी. तो if the examiner asks you for dry crystals या pure crystals, तो then we will say heat किसको? Filtrate को to saturation point. Saturation point क्या है? It is basically when you start seeing small particles. इसको हम point of crystallization भी बोलते हैं. Point of crystallization. This is how all the crystals in the world are made. Whether they are gems, whether they are candies, whether they are medicine, all the crystals are made like this. Point of crystallization. And slowly cool. The slower you do, the bigger the crystal, the clearer the crystal. Okay, but of course, it has a cost. Slow करने में आपका time लगेगा. आपने अगर लोग रखे हैं उसको ख्याल रखने के लिए आपको उनको पे ज्यादा करना पड़ेगा. But the thing will have greater value. Clarity उसमें ज्यादा होगी. And this is actually how many gemstones are also made in nature. कि वो millions of years में cool down होते हैं और उसकी वजह से वो बड़े clear crystals होते हैं. Clarity is so important whenever you buy gemstones. आपने देखा होगा movies में वो एक छोटी सी माइक्रोस्कोप के थ्रू डायमंड्स को देख रहे होते हैं कि ये डायमंड ओरिजिनल है कि नहीं है. बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर क्लैरिटी. उसमें अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं तो मोस्ट लाइकली वो मतलब नेचुरल है, और अगर उसमें डस्ट पार्टिकल्स नहीं हैं तो लाइकली चांस है कि या तो वो बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, या फिर वो आर्टिफिशियल है. बट अब तो खैर देयर इज टेक्नोलॉजी अवेलेबल कि आप आर्टिफिशियली डायमंड बनाते हुए उसमें डस्ट भी डाल दो ताकि वो लगे कि वाजिबा ओरिजिनल है. इफ द एग्जामिनर सेज कि ड्राई पाउडर चाहिए मुझे, then you don't say that heat the filtrate to saturation point. You say heat to constant mass. And I'm underlining this. This is a must. This or this is a must that you must write. Sorry. Similarly, wash and dry दोनों लिखना जरूरी है. Underline points के बगैर मार्क नहीं मिलेगा. Heat to constant mass का मतलब ये है कि whenever you heat something, उसमें से solvent evaporate करेगा. अगर water है तो evaporate करेगा. So some of it will be तो वो जब चले गया तो mass कम होएगा. But eventually, if you remove all the water, even the water of crystallization, the required water molecules that make crystals happen, अगर वो भी आप evaporate कर दोगे, then you will be left with dry powder. And that means then it will not change its mass. अगर आप उसको read करोगे values को कि आपने heat किया, balance पे रखा, let's suppose 3.5 grams आ गया, फिर heat किया, फिर balance पे रखा 3.4 आ गया, फिर heat किया, फिर रखा 3.2 आ गया, फिर heat किया, फिर रखा 3.2 ही आ गया, फिर heat किया, फिर रखा, फिर 3.2 है. Value starts repeating. That shows कि वो constant mass पे आ गया, सारा water evaporate कर गया. That's when you stop. अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा. This kind of graph is what you will see. This constant idea is telling me that all the water has been removed. Okay. Last thing for today, sources of heat. Sure, आप heat कर रहे हो,
कौन से sources use करेंगे आप? What will you use to heat it? For that, remember that we have to separate things based on whether they are flammable or non-flammable. English is a weird language. Flammable and inflammable both mean something that can catch on fire. तो खाली flammable और inflammable दोनों का एक ही मतलब होता है. So things that don't catch on fire through a flame, they are called non-flammable. So for inflammable things, things that do catch on fire, we use electric heater. If you don't have that, then you use water or sand bath. Not bath, bath. And for non-flammable things, you can use a burner, which means कि उसमें flame हो सकता है. So you can use spirit lamp or Bunsen burner. They both use flame to heat things up. Similarly, when you're heating things up, so again, this is for those who are preparing for distinction, कि आपने हम boiling stones रखते हैं या boiling marbles भी बोलते हैं उनको. जब भी आप हीट करोगे और किसी लिक्विड को, अगर आप वहां पे boiling stones रखते हो तो उसका मकसद ये होता है कि पहले boiling stones हीट होते हैं and then they slowly dissipate the heat to whatever liquid you have. So this means they will evenly heat the liquid, and secondly, they avoid bumping क्योंकि vapors slow down हो जाते हैं. If you don't use boiling stones, then you can use magnetic stirrers. लेकिन छोड़ो उसको, वो magnetic stirrers जो हैं वो उनकी अपनी complications होती हैं. खैर, most of the students don't need to know about boiling stones. Okay, so that's it for today. Any questions? I will send these notes to you as well in case आपको देखना है, obviously याद करना, terms are important. Okay, take care. Thank you so much. And again, apologies for being late. Allah Hafiz, sir. See you tomorrow. Allah Hafiz. Hafiz. By the way, अच्छा चलो ठीक है, Allah Hafiz.